Perigal. This law was proposed by Thomas Graham. In 1881. ठीक है 1881 में थॉमस ग्राम प्रपोज दिस लॉ. ठीक है हिन लॉ में आहे छा, व्हाट इज लाइंग इन दिस लॉ? ही फाउंड मैथमेटिकल relationship between rate of diffusion and densities or molecular masses of gases at constant pressure and temperature. तो इनकी फाइंडिंग क्या हुई? So he found a mathematical relationship between what? Rate of diffusion of a gas and densities or molecular mass of gases at constant pressure and temperature. So हिन जेका है हिकड़ी mathematical relationship find कई छाजे विच में if R is the rate of diffusion in the which में and D is the density and M is the molecular mass of gas. तो इन जे which में rate of diffusion and density or molecular mass in the which में mathematical relationship introduced है and this relationship is working at constant pressure and temperature. So this relationship is working at constant pressure and temperature. ठीक है. अच्छा हानी इन खां पोइ पहिरीं असां पढ़ूं त व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन छा आहे? इनजी डेफिनेशन लिखां थो, पोइ तव्हांखे सम्झाइण जी कोशिशि कयां थो. द स्पॉन्टेनियस मीन्स पंहिंजो पाण विदाउट एक्सटर्नल हेल्प. ठीकु आहे. द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ वन गैस into other gas. ठीक है. इंटरमिक्सिंग ऑफ इते थोड़ी मां एक्सटेंशन कयां तो नॉन रिएक्टिंग वन गैस इनटू अदर गैस, यानी जेके गैसेस असां मिक्स कयूं था, जेके गैसेस मिक्स थियनि थियूं दे शुड बी नॉन रिएक्टिव. ठीकु आहे. नॉन रिएक्टिव हुजनि. स्पॉन्टेनियस माना पंहिंजो पाण मिक्सिंग थींदी. वी डोंट डू एनीथिंग. ठीकु आहे. गैसेस पंहिंजो पाण मिक्स थींदियूं. ठीकु आहे. स्पॉन्टेनियस intermixing of non-reacting gases or non-reacting one gas into other gas is called diffusion. इनके असां डिफ्यूजन चवंदासीं. ठीकु आहे. जीअं हिकु गैस ॿी गैस में मिक्स थिए थी इनके असां डिफ्यूजन चऊं था. सिमिलरली हिकु लिक्विड ॿिए लिक्विड में बि डिफ्यूज़ थींदो आहे. हिकु सॉलिड ॿिए सॉलिड में बि छा थींदो आहे? डिफ्यूज़ थींदो आहे. बट द एक्सटेंट ऑफ जेका मिक्सिंग आहे उहा गैसेस में फास्ट हूंदी. एज from Graham's law चए थो the rate of diffusion is inversely proportional to square root of density or rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular mass. माना molecular mass are inversely proportional, densities are inversely proportional. ठीक है. We know that density of solid is much greater than the density of liquids. Density of liquid is very close to the density of solid. ठीक है. त liquid ऐं सॉलिड जी जेका रेट ऑफ डिफ्यूजन आहे त उहो हिक ॿिए सां एतिरो क्लोज त न हूंदो त उनजी डेंसिटीज़ क्लोज इन करे जेको आहे थोरी घणी हुन में क्लोजनेस थी सघे थी. पर जेको गैसेस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन आहे, छो जो गैसेस जी डेंसिटी तमामु घटि हूंदी आहे, तमामु घटि आहे, त रेट ऑफ डिफ्यूजन छा थींदो? तमामु वधीक थींदो. ठीकु आहे. त डिफ्यूजन जेको आहे उहा आहे स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस विद ईच अदर. या हिकिड़ी गैस जेका आहे उहा ॿी गैस में मिक्स थिए पर उहे ॿई गैसेस पाण में रिएक्ट न कनि त असां उनखे छा चवंदासीं? इहो चवंदासीं डिफ्यूजन चवंदासीं. ॿियो थींदो आहे डिफ्यूजन. नाउ डिफ्यूजन छा आहे? डिफ्यूजन इहो आहे द escaping of gas molecules one by one
from tiny. Tiny means tamam nando hoje. Very small. Tiny means very small. Very small hole is called effusion. हाणे सो छा थींदो आहे त तव्हांजो जेको आहे डिफ्यूजन एफ्यूजन में डिफरेंस कहिड़ो आहे मिसाल तौरु असां वटि हिकिड़ी ए गैस ठीकु आहे दिस इज़ द गैस ए एनी गैस एंड दिस वन इज़ द गैस बी हे बि का बि गैस आहे से असां हिनखे शेड ॾियूं था ठीकु आहे नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स देम इन द सिंगल कंटेनर छा थींदो इहे ॿई गैसिस हिक ॿिए में मिक्स थी वेंदियूं गैस ए एंड बी सो दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस A and B ठीक है। तो हाँ तव्हांजो ॾिसो हिन में जेको आहे तव्हांजा गैसिस जेके A and B आहिनि उहे छा थियूं मिक्स थियूं दिस इज़ वॉट डिफ्यूजन इहो छा आहे डिफ्यूजन आहे ठीकु आहे हाणे डिफ्यूजन आहे हाणे छा थींदो त हिते ही तव्हांजी एटमॉस्फेयर आहे ठीकु आहे से हे मिक्सचर असां मां हिते वरी ड्रा कयां थो ही असांजो मिक्सचर आहे जंहिंमें A and B मौजूदु आहिनि ठीक है दिस इज अ मिक्सचर ऑफ A and B गैसेस इनमें मौजूद हैं ठीक है एट सर्टेन प्रेशर इन सर्टेन प्रेशर डेवलप कन थियूं ठीक है हाणे असां इनमें स्मॉल होल कयूं था ठीक है इन होल मां छा थींदो त A ऐं B स्केप थियण शुरू कंदा हितां निकिरणु शुरू कंदा ठीक है त A ऐं B जेको आहे दिस इज़ अ A दिस इज़ अ B इहे हितां निकिरणु शुरू कंदा एंड स्प्रेड इन एटमॉस्फेयर एनीवेयर इफ दिस इज़ अ एटमॉस्फेयर ठीक है तो हाँ ये जेके गैस हाँ ॾिसो A B गैसेस मिक्स कयोसीं दिस इज गैसेस मिक्स थियूं दिस इज वॉट डिफ्यूजन हे डिफ्यूजन ठीक है हे डिफ्यूजन आहे हाँ हे डिफ्यूज गैसेस आहिनि इतां असां हिकिड़ो स्मॉल होल ठाहियो आहे ठीक है इन होल मां गैसेस स्केप थियनि थियूं ॿाहिरि निकिरनि ठीक है त इन जेको ॿाहिरि निकिरी करे माना हितां जॾहिं हाई कंसंट्रेशन खां लो कंसंट्रेशन ॾे मूव कंदियूं ठीकु आहे थ्रू स्मॉल टिनी होल असां हे जेका गैस हितां निकिती दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन सो आई होप कि तव्हां सम्झी विया हूंदव त डिफ्यूजन जेको आहे उहो गैस जे मिक्स थियण खे चइबो आहे डिफ्यूजन जेको आहे जॾहिं गैस भले उहा सिंगल मां मिक्सचर लिखियो आहे हिते सिंगल गैस बि थी सघे थी जेकॾहिं असां होल हितां कयूं था त सिर्फ़ु A ॿाहिरि ईंदी हितां कयूं था त सिर्फ़ु B ॿाहिरि ईंदी जेकॾहिं हितां कयूं था त A ऐं B ॿई जेके गैसिस आहिनि उहे ॿाहिरि ईंदियूं ठीकु आहे सो तव्हांजी जेका डिफ्यूजन आहे उहा मिक्सिंग ऑफ गैस आहे इफ्यूजन जो है वो स्केपिंग ऑफ गैस है माना फ्रॉम टिनी होल जो है जो कॉमन एग्जांपल जो असां जो ऑब्जर्व किया वो इहो आहे तव्हांजो जेको आहे छा चइबो आहे पाण टायर जो पंक्चर थींदो आहे त नंढो सुराख हूंदो आहे उतां टायर की हवा जेका आहे आहिस्ता आहिस्ता छा थींदी आहे स्किप थींदी आहे निकिरी वेंदी आहे ठीकु आहे इफ्यूजन जो इहो एग्जांपल आहे डिफ्यूजन जो इहो आहे तव्हां घर वेठा आहियो जेकॾहिं एयर फ्रेशर पाण घर में यूज़ कयूं था कंहिं कर्टेन ते लॻायूं था त विदिन सेकेंड्स जेका आहे उहा ख़ुशबू जेका आहे उहा सॼे कमरे में फैलिजी वेंदी आहे दिस इज़ वॉट डिफ्यूजन कीअं डिफ्यूजन आहे त जेके परफ्यूम मॉलिक्यूल्स आहिनि जेके असां स्प्रे मां कर्टेन ते लॻायासीं उहो कर्टेन मां छा थींदा छो जो बीइंग गैस उहे मूव कंदा त रूम में ऑलरेडी छा प्रेजेंट आहे ऑलरेडी रूम में जेका आहे उहो एयर प्रेजेंट आहे ठीकु आहे हाणे उहो एयर बि गैस आहे ऐं परफ्यूम मॉलिक्यूल्स बि गैस आहिनि हिक ॿिए में मिक्स थी करे छा थींदा एक्सपेंड थींदा ठीकु आहे एक्सपेंड थियण खां पोइ जेको आहे तव्हांजी ख़ुशबू जेका आहे उहा एयर फ्रेशर में जेका आहे एयर फ्रेशर जेको आहे उहो एयर में फैलिजी वेंदो ठीकु आहे ऐं डिफ्यूजन जेका आहे उहा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे कंटिन्यूअस आहे त उहा ख़ुशबू जेका आहे कुझु सेकेंड्स ईंदी आहे या कुछ मिनट्स ताईं ईंदी आहे उन खां बाद गायब थी वेंदी गायब छो थी वेंदी आहे त जेकॾहिं असांजो दरवाज़ो खुलियल आहे दरी खुलियल आहे किथां बि थोरो स्पेस आहे उतां ख़ुशबू जा मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता मूव कंदा छो त उनजी कंसंट्रेशन रूम में ज़्यादा आहे ॿाहिरि घटि आहे त उहो आहिस्ता आहिस्ता ॿाहिरि स्किप कंदा वेंदा ठीकु आहे सो दिस इज़ वॉट डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन हिन जी तव्हां स्क्रीनशॉट वठो स्टेटमेंटनि जी जेको आहे असां हिनखे जेको डिफाइन कंदा आहियूं स्टेटमेंट This law states that, comma inverted comma, at constant pressure and temperature, the rate of diffusion of a gas is inversely
अच्छा हिते जेको आहे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हूंदो आहे ऐं रेट ऑफ इफ्यूजन भी हूंदो आहे। रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square root of its density or molecular mass ठीक है। हाणे ला चए थो त दिस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वी हैव टू कीप प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। द रेट ऑफ डिफ्यूजन or effusion of a gas, effusion or diffusion is inversely proportional to the square root of its density. Square root means under root of its density or molecular mass. Density or molecular mass, as we know that कल असां डिस्कस कयो से the density of gas is directly proportional to molecular mass. Greater or larger the molecular mass, the more will be density. ठीक है। सो असां ॿई यूज़ कंदा आहियूं, डेंसिटी भी molecular डेंसिटी गिवन आहे त डेंसिटी फार्मूला लिखंदासीं, molecular mass गिवन आहे त molecular mass लिखंदासीं। ठीक है। हाणे असांखे करिणो छा आहे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हे स्टेटमेंट आहे जी। ठीक है। त स्टेटमेंट इहा आहे त इफ आर इज़ रेट ऑफ डिफ्यूजन, चए थो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है। त डेंसिटी चए थो जेतिरी घटि हूंदी ओतिरो रेट ऑफ डिफ्यूजन वधीक हूंदो। त अकॉर्डिंग टू दिस लॉ छा चए थो, लॉ चए थो लाइटर गैसेस छा लाइटर गैसेस बाबा चए थो डिफ्यूज़ फास्टर देन हैवियर गैसेस। बाबा ये छो तो लाइटर गैसेस हैवियर गैसेस, लाइटर मीन्स लो डेंसिटी। ठीक है। हैवियर मीन्स हाई डेंसिटी। ठीक है। हाँ डेंसिटी जेतरी वधिक हूंदी, छो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी द डिफ्यूजन छा हूंदो, घटि हूंदो। ठीक है। तो इहो तव्हांखे ज़हन में रखणु घुरिजे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जेतिरो मॉलिक्यूलर मास गैस जो घटि हूंदो ओतिरो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन छा हूंदो, वधीक हूंदो। तव्हां मूंखे हे अरेंज करे ॾियो, करेक्टली अरेंज फॉलोइंग गैसेस in the decreasing order of their rate of diffusion, rates of diffusion। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जे हिसाब सां तव्हां गैसेस के करेक्टली प्लेस कयो त जीअं उन्हनि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज़ थींदो वञे। ठीक है। ए आहे CO2, B आहे CO, C आहे N2, D आहे H2, E आहे Cl2, F आहे CH4, G आहे तव्हांजो नमूनिया अमोनिया। ठीक है। हाँ तव्हां इनके करेक्टली प्लेस कयो त मां इनकी मैथमेटिकल जेका इक्वेशन जेका आहे उहा ड्राइव करे छॾियां। परफ्यूम बाटल मां निकिरे थी, इफ्यूजन आहे परफ्यूम जो बाटल में निकरे तो वो इफ्यूजन आहे, निकरी करे जो हवा में रूम में मिक्स थे तो दैट इज़ डिफ्यूजन। मैथमेटिकली तव्हां इनके रीअरेंज कयो, शाबाश। मैथमेटिकली मैं आंसर लिखा तो नंबर 1 ते हे अचे, नंबर 2 ते हे अचे, नंबर 3 ते हे अचे, नंबर 4 ते हे ॿई अचनि, नंबर 5 ते हे अचे, नंबर 6 ते हे अचे। जेकॾहिं तव्हांजो ऑर्डर इहो आहे त तव्हां सही आहियो। ॾिसो जवाबु लिखी वठो ईअं करेक्ट। जेकॾहिं ईअं आहे येस आर नो लिखो बस। ठीकु आहे। मां हिते लिखी छॾियो आहे, तव्हां ॾिसो ऐं पंहिंजो जवाबु जेको आहे उहो कंपेयर कयो। ठीकु आहे। हाणे मैथमेटिकली इफ R is rate of diffusion, if R is rate of diffusion, according to its statement that the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density, the inversely proportional to square root of its density at constant pressure and temperature। चलो बाबा यह गाल थी वही। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म क्यों, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म कंदासीं छा ईंदो के अपॉन अंडर रूट डी। डी डेंसिटी जेका वेरिएबल आहे, के कांस्टेंट आहे, असां हिनखे हेॾे खणी ईंदासीं। ठीकु आहे। हेॾे डिवाइड करे थो हेॾे आर सां मल्टीप्लाई कंदो त R इंटू अंडर रूट डी इज़ इक्वल टू छा थींदो के। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1।
चे तो ये इक्वेशन 1 में जो के आ इट इज अ कांस्टेंट दिस के इज कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस केड़ी भी गैस हुए ऑल गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इफ वी कीप प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट चे तो के जो वैल्यू जो है वो सभिन गैसेस लाए छा रहंदो सेम रहंदो ठीक है बी गाल या इट इज नॉट पॉसिबल असा लाए यो पॉसिबल ना है पॉसिबल टू डिटरमिन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन इंडिविजुअल गैस जो तो असा ला यो पॉसिबल ना है तो असा अकेली गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करे सगूं बुधाए सगूं मालूम करे सगूं मिसाल तौर हाइड्रोजन आ तो हाइड्रोजन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन केतरो आ और यो असा नथा बुधाए सगूं छो नथा बुधाए सगूं छो जो उन सां कंपेरिजन ला बी गैस ना है माना असा एब्सोल्यूट रेट ऑफ डिफ्यूजन नथा बुधाए सगूं असा कहीं भी गैस जे रेट ऑफ डिफ्यूजन के बी गैस से कंपेयर करे सगूं था कंपेरिजन ला जरूर बी गैस मौजूद हुए ठीक है जरूरी ना तो सेम हुए एवरी टाइम ता डिफरेंट गैसेस के एक बे से कंपेयर करे सगो था पो हे अगर जे अस इंडिविजुअल गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम नथा करे सगूं देन व्हाट वी कैन डू वी कैन कंपेयर rates of diffusion of two gases diffusion of two gases असा बिन गैसेस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर तो जरूर करे सगूं था पर असा हकड़ी गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन नथा बुधाए सगूं तो उन जो न्यूमेरिकल वैल्यू केतरो थियण खपे ठीक है असा जो है माना बिन गैसेस जो कंपेयर करे सगूं था अचो तो इन इक्वेशन के अगते वधायूं हाने जे कदे अच्छा हिकड़ी गैस नथा वठी सघूं था असांखे कंपेरिजन लाइ ॿी गैस खपे ऐं कंपेरिजन में छा कबी आहे डिवीजन कबी आहे ठीक है सो R1 इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू रेडिकल D1 इज द डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस असां कंपेरिजन कयूं था माना डिवीजन कंदासीं R2 इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस इनटू रेडिकल D2 इज द डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस इज इक्वल टू के मां तव्हांखे ॿुधायो त K has same numerical value for every gas at constant pressure and temperature. So K cancel थिया बचो छा R1 upon R2 is equal to radical हाँ ॾिसो D2 इन सां डिवाइड करे थो तो हेॾे खणी ईंदासीं मल्टीप्लाई कंदो तो D2 मथे हलियो वेंदो डिवाइडेड बाय D1 हिन सां मल्टीप्लाई करे थो यानी मथे आहे हिन साइड उहो डिवाइड कंदो तो D1 ठीक है तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर छा थी वई 2 थी वई ठीक है as we know that what we know that the density of a gas is directly proportional to molecular mass. So instead of writing density we can write molecular mass also. So this equation 2 becomes R1 upon R2 is equal to radical M2 upon M1. This is equation number 3 ठीक है सो असा माना हे भी यूज करे सघूं था डेंसिटी भी यूज करे सघूं था मॉलिक्यूलर मास भी यूज करे सघूं था टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन के अवॉइड करण लाए तव्हां छा कंदो त हर गैस में जो वन फैक्टर आहे वो लाइटर गैस ला यूज कंदो R1 इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइटर गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइटर गैस देन R2 छा थींदो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हेवियर गैस माना तव्हां कहीं भी जो कंफ्यूजन के दूर करण लाए जो वन फैक्टर आ R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइटर गैस R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हेवियर गैस M1 लाइटर गैस M2 हेवियर गैस सो M1 इज व्हाट मॉलिक्यूलर मास ऑफ लाइटर गैस so what would be the M2 is the molecular mass of a heavier gas ठीक है similarly D1 is the density of lighter gas then what is the D2 is the density of heavier gas ठीक है so मां तव्हांखे ॿुधायो त हमेशा तव्हां
कंफ्यूजन खे अवॉइड करण लाइ जेको 1 फैक्टर आहे जिथे बि 1 लिखियल आहे R1 आहे M1 आहे D1 आहे त तव्हां इनखे लाइटर गैस लाइ यूज़ कंदव ऐं जेको तव्हांजो 2 फैक्टर आहे उहो तव्हां हेवियर गैस लाइ यूज़ कंदव ठीकु आहे स्क्रीनशॉट वठो त अॻिते हलूं हिन लॉ खे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करण लाइ हिकिड़ी 100 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब वठिबी आहे ठीकु आहे द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लेंथ आहे ट्यूब जी एंड दिस ट्यूब इज़ ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स इन ट्यूब में कुछ न हुजे छा हूंदो स्टूडेंट्स ॿुधाए सघो था कैन यू कंपेयर 3 गैसेस और मोर यस ऑफ कोर्स वी कैन कंपेयर ठीकु आहे हाणे 100 जेका आहे तव्हांजी मिलीलीटर सॉरी सेंटीमीटर लेंथ आहे इन में छा मौजूदु हूंदो केरु ॿुधाईंदो तव्हां में गैस एयर छा मौजूदु आहे एयर ठीकु आहे एयर मौजूदु आहे हाणे असां इनखे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करण लाइ हिकिड़ी साइड खां असां अमोनिया प्लस वाटर असां जो जेको कॉटन स्वाब आहे ठीकु आहे माना कॉटन जेका आहे उनखे अमोनिया जी सॉल्यूशन में डिप करे असां हिन साइड लॻायूं था ठीकु आहे माना हिते छा लॻल आहे हिते अमोनिया लॻल आहे ठीकु आहे अमोनिया छा में डिप थियल आहे वाटर में ठीकु आहे अमोनिया गैस आहे वाटर सॉल्युबल गैस आहे पर उतां आहिस्ता आहिस्ता स्किप थींदी वेंदी ठीकु आहे हिन साइड खां असां ॿी गैस लॻायूं था एंड दैट इज़ HCl ठीकु आहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जेको आहे हिन साइड लॻल आहे HCl प्लस वाटर ठीकु आहे हिते बि कॉटन स्वाब असां लॻायो आहे हाणे जेका अंदरि एयर हुई ठीकु आहे एयर में जेको आहे ये गैसेस छा थींदियूं मिक्स थियणु शुरू थींदियूं ठीकु आहे एयर में तव्हांजो अमोनिया हिन साइड खां ट्रेवल थियणु शुरू थींदी ऐं तव्हांजो जेको HCl आहे उहो हिन साइड खां ट्रेवल थियणु शुरू थींदी अराउंड जेको आहे इफ जेको आहे हिन पोर्शन ते एट दिस पोर्शन माना हितां केरु अचे थो अमोनिया आई ठीकु आहे हितां केरु आयो HCl आयो अमोनिया HCl मिली करे वाइट सॉलिड ठाहींदा केरु अमोनिया क्लोराइड माना जिथे इहे मिक्स थींदा पाण में मिलंदा उन इंस्टेंट ते छा ठहंदो वाइट हिकिड़ी रिंग डेवलप थींदी ठीकु आहे उहो इन ट्यूब जे अंदरि हिन जॻह ते ठीकु आहे हाणे अमोनिया जेको सॉरी मां थोरो उल्टो लिखी आहियां हिन डिस्टेंस खे थोरो वधायूं था हे डिस्टेंस हिते रखूं था ठीकु आहे छो जो अमोनिया लाइटर गैस आहे त हिन जो डिस्टेंस जेको आहे वधीक हूंदो ठीकु आहे हाणे हे जेको अमोनिया आहे अमोनिया इन जॻह ते ऐं अमोनियम जेको तव्हांजो HCl आहे उहो इन जॻह ते जॾहिं मिक्स थींदा त छा ठहंदो मिक्स थियण खां पोइ तव्हांजो अमोनियम क्लोराइड ठहंदो हिते वाइट जंक्शन ठही वेंदो ठीकु आहे वाइट कलर जा फ्यूम्स डेवलप थींदा जेके सॉलिडिफाई थी वेंदा ठीकु आहे माना हेॾा अमोनिया ट्रेवल कंदी आई एयर में डिफ्यूज़ थींदी आई हेॾा HCl डिफ्यूज़ थींदो आहे अॼुकल्ह ॾिस बाबा एयर आहे हिकिड़ी गैस आहे उन में 2 गैसिस ॿियूं डिफ्यूज़ थियनि थियूं ठीकु आहे त असां जेको आहे इहो माना 3 या 4 या 5 गैसिस बि डिफ्यूज़ करे सघूं था ठीकु आहे हाणे अमोनिया ऐं HCl जंहिं जॻह ते मिक्स थींदा मिलंदा उते वाइट फ्यूम्स ठहंदा उते माना केमिकल रिएक्शन थींदो छा थींदो त अमोनिया प्लस HCl हेवी गैस व्हाट वुड हैपन कि वाइट सॉलिड ठहंदो अमोनियम क्लोराइड ठीकु आहे वाइट सॉलिड ठहंदो जंहिं जॻह ते वाइट सॉलिड ठहणु शुरू थिए उते असांखे ख़बर पइजी वई त उते तव्हांजो इहे ॿई छा थिया आहिनि मिक्स थी विया आहिनि ठीकु आहे हाणे जॾहिं इहे मिक्स थी विया आहिनि त हिन जॻह ते मिक्स थिया आहिनि त अमोनिया एतिरो डिस्टेंस ट्रेवल कयो आहे ऐं HCl एतिरो डिस्टेंस ट्रेवल कयो आहे HCl जेको डिस्टेंस ट्रेवल कयो आहे उहो आहे 40 सेंटीमीटर ऐं जेको अमोनिया डिस्टेंस ट्रेवल कयो आहे दैट इज़ 60 सेंटीमीटर छो जो टोटल जेको डिस्टेंस हुयो उहो केतिरो हुयो 100 सेंटीमीटर 100 मां अमोनिया जेको आहे 60 ट्रेवल कयो आहे ऐं HCl जेको आहे उहो 40 डिस्टेंस जेको आहे उहो छा कयो आहे ट्रेवल कयो आहे ठीकु आहे अञा मतिलबु तव्हांखे थोरो विच ते नज़र ॾियो इमेजिन कयो थोरो अञा इनसाइड आहे ठीकु आहे हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो रेट ऑफ डिफ्यूजन कंहिंजो वधीक आहे रेट ऑफ डिफ्यूजन कंहिंजो वधीक आहे छॾेसि पुटु केरु ॿुधाईंदो रेट ऑफ डिफ्यूजन कंहिंजो वधीक आहे अमोनिया जो HCl जो HCl अमोनिया HCl पुटु हाणे एयर आहे एयर में डिफ्यूज़ अमोनिया वधीक थी आहे 60 सेंटीमीटर ऐं HCl थियो आहे 40 सेंटीमीटर त अंडरस्टूड आहे त रेट ऑफ डिफ्यूजन कंहिंजो वधीक आहे अमोनिया जो अचो इनखे प्रूव कयूं ठीकु आहे R1 upon R2 is equal to M2 upon M1
ठीक है। हाँ R1 जो है हिन घणो 60 लाइटर गैस कंदो अमोनिया है या पे ये लिखो तो अमोनिया अपान HCl इज इक्वल टू रेडिकल M2 अपान M1 ठीक है। हाँ अमोनिया जो डिस्टेंस है वो केतरो है 60 है, HCl जो डिस्टेंस केतरो है 40 है इज इक्वल टू रेडिकल M2 हेवियर गैस जो मास केतरो है HCl जो 35.5 है ठीक है। लाइटर गैस तव्हांजी अमोनिया जो मास केतरो आहे 17 आहे। हाणे हे एग्जैक्टली थींदो 1.5 हिन जो रेडिकल में जवाब ईंदो 2.16 1.5 इज इक्वल टू रेडिकल छॾाईंदो त हे थींदो 1.46 एप्रॉक्सीमेटली ॾिसो तव्हां त इक्वल इन 1.5 इज इक्वल टू 1.5 हैंस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट जो इन्हनि डिस्टेंस ट्रेवल किया असां डिस्टेंस जो रेशो वरितोसीं उहो रेडिकल में रखी करे जॾहिं उन्हनि जे मालिकुलर मासिस के डिवाइड कयूं था त रेशो जो आहे उहो सेम अचे थो। त वी से दैट त ही लॉ जो आहे एक्सपेरिमेंटली छा थियो प्रूव थियो ठीक है। स्क्रीनशॉट वठो शाबाश था त जेकॾहिं असांखे रेट ऑफ इफियन मालूम करणो आहे ठीक है त उन लाइ थोड़ी इक्वेशन चेंज कंदासीं ठीक है। हाणे हिकिड़ी शइ ज़हन में रखो त रेट ऑफ इफियन हाणे रेट ऑफ इफियन जो आहे वो कीअं फाइंड कंदासीं उनजी हिकिड़ी सेपरेट इक्वेशन आहे जाते असां R लिखूं था R is replaced by V upon T. V is the volume of container ठीक है and T is the time taken by a gas to effuse the gas effuse थियण में केतिरो टाइम वठे थी पई ठीक है। सो ही जेका इक्वेशन है या असांखे रेट ऑफ इफियन फाइंड करण में हेल्प कंदी ठीक है। HCl जो मास 36.5 हाँ सॉरी 36.5 है अच्छा। R जो है वो तव्हांजो रिप्लेस कंदासीं छा सां V अपॉन T सां। V इज़ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, T इज़ द टाइम टेकन बाय गैस टू इफ्यूज़ माना जेको असां गैस जे सिलेंडर में स्मॉल पिन होल सुराख किया उतां गैस निकरण में टाइम केतिरो वठे थी ऐं उन कंटेनर जो वॉल्यूम केतिरो आहे। वी नीड दीज टू थिंग्स ठीक है एंड दीज वैल्यूज़ आर गिवन इन द प्रॉब्लम। ये वैल्यूज़ तव्हांखे प्रॉब्लम में मिलियल हूंदा उन गिवन वैल्यूज़ मां तव्हां रेट ऑफ इफियन फाइंड करे सघो था। रेट ऑफ इफियन भी तव्हां हिकिड़ी गैस जो नथा ॿुधाए सघो। वी कैन कंपेयर द रेट ऑफ इफियन एग्जैक्टली सेम एज वी डिड इन द रेट ऑफ डिफियन एज वी डिड कंपेरिजन इन द रेट ऑफ डिफियन ठीक है। सो हाणे जेकॾहिं R के V अपॉन T सां जो आहे रिप्लेस कयूं था त R1 रिप्लेस थींदो छा सां V1 अपॉन T1 सां एंड R2 छा सां रिप्लेस थींदो V2 अपॉन T2 सां। इक्वेशन हुई छा इक्वेशन ही असांजी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रेडिकल M2 अपॉन M1। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स असांखे डेंसिटी न मालिकुलर मास मिलल हूंदो आहे इन करे मां भी मालिकुलर मास ही लिखां थो ठीक है। R1 के छा सां रिप्लेस कयो हिन सां। सो इंस्टेड ऑफ R1 वी राइट V1 अपॉन T1 instead of writing R2 we write V2 upon T2 V2 upon T2 is equal to radical M2 upon M1 R M2 upon M1 R हिनखे असां V2 upon T2 के जॾहिं हेॾे मथे खणी वेंदासीं त हे छा थींदा चेंज थींदा रिवर्स थींदा डिवाइड वारो मल्टीप्लाई कंदो मल्टीप्लाई वारो डिवाइड कंदो त हिते इक्वेशन असांजी बीहंदी V1 upon T1 into हाँ छा लिखा मां T2 अपॉन V2 या V2 अपॉन T2 छा लिखा शाबाश असां लिखंदासीं छा T2 अपॉन V2 इज इक्वल टू छा थींदो अंडर रूट रेडिकल M2 अपॉन M1। दिस इज इक्वेशन नंबर कहिड़ी कयूं इनखे आई थिंक अगर 3 इक्वेशन हुयूं इनखे इक्वेशन नंबर 4 कंदासीं। हाणे हे इक्वेशन तॾहिं यूज़ कंदासीं this equation 4 can be used when we are given two different volumes। जॾहिं असांखे माना हिकिड़ी गैस जो हिकिड़ो वॉल्यूम मिलियल हुजे ॿी गैस जो ॿियो वॉल्यूम मिलियल हुजे त असां हे इक्वेशन यूज़ कंदासीं। लेट इफ V1 इज इक्वल टू V2 जेकॾहिं वॉल्यूम सेम आहे ॿिन्ही गैसिस जो वॉल्यूम छा आहे सेम आहे देन व्हाट वुड हैपन के हे V1 ऐं V2 छा थींदा कैंसिल थी वेंदा। V1 ऐं V2 कैंसिल थी वेंदा मथे छा बचो T2 हेठि छा बचो T1 देन इक्वेशन बिकम्स T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू रेडिकल M2 अपॉन M1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5।
हाणे ये ॿई इक्वेशन्स जेके आहिनि उहो गैस केतिरो टाइम वठंदी छा लाइ इफ्यूज़ थियण लाइ कंहिं कंटेनर मां असां ॿई इक्वेशन्स यूज़ करे सघूं था. इफ़ वी आर गिवन सेपरेट और डिफरेंट वॉल्यूम्स फॉर बोथ गैसेस वी विल गो फॉर द इक्वेशन नंबर 4. इफ़ वी आर गिवन सेम वॉल्यूम फॉर बोथ गैसेस उन सेम कंटेनर मां गैसेस इफ्यूज़ थियनि थियूं त वी विल यूज़ दिस इक्वेशन. ठीकु आहे, स्क्रीनशॉट वठो. शाबाश शाबाश बॉयज़, तव्हां सही आंसर ॾिनो आहे. गर्ल्स यू ऑल्सो T2/V2 थींदो. शाबाश, स्क्रीनशॉट वठो इनजी. एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन. त लॉ ऑफ डिफ्यूजन जूं एप्लीकेशंस कहिड़ियूं आहिनि? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जूं. ठीकु आहे. नंबर 1 पहिरीं एप्लीकेशन इहा आहे, वी कैन रिड्यूस poisonous effect of poisonous gas. और पहिरियों जेको इनजी एप्लीकेशन उहा इहा आहे त असां कंहिं बि गैस जे पॉइजनस इफेक्ट खे रिड्यूस करे सघूं था. ठीकु आहे. हाणे कीअं रिड्यूस करे सघूं था? स्पेशली जेके गैस ऑयल फील्ड्स हूंदियूं आहिनि उन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हूंदी आहे. कहिड़ी गैस हूंदी आहे? हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीकु आहे. हिन जी रोटन एग लाइक स्मेल हूंदी आहे, सड़ियल अंडनि वांगुरु एग लाइक स्मेल. ठीकु आहे. डिसएग्रेबल एंड इट इज़ हाईली पॉइजनस गैस. हाईली पॉइजनस गैस आहे. जेकॾहिं जी कंसंट्रेशन 3% खां एक्सीड करे वञे, ठीकु आहे, त मैन कैन डाई, वुमन ऑल्सो मथां सम्झो तव्हां बची वेंदो. त मैन और वुमेन कैन डाई. ठीकु आहे. त माण्हू जेको आहे जेकॾहिं इन जी कंसंट्रेशन जेका आहे एयर में 3% खां एक्सीड करे वञे त माण्हू सर्वाइव न करे सघंदो. ठीकु आहे. हे सेंस ऑफ स्मेल ते पहिरें जेका आहे उहा अटैक कंदी आहे. उनखां पोइ CNS सिस्टम जेको आहे उहो डैमेज थी वेंदो आहे. जॾहिं असांजो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज थी वेंदो त बाक़ी जेके बॉडी एक्टिविटीज़ आहिनि, ठीकु आहे, असांजा मैसेंजर ट्रांसफर RNA जॾहिं कमु न कंदा, ठीकु आहे, त असांजी बॉडी में कोई मैसेज न वेंदो ऐं एंजाइम्स जेके आहिनि ठिप थी वेंदियूं, माण्हू मरी वेंदो. ठीकु आहे. सो छा हूंदो आहे त गैस ऑयल वेल्स में जेको आहे हिकिड़ो इन्हनि जी इन जो हाइड्रोजन सल्फाइड जा डिटेक्टर लॻल हूंदा आहिनि. ठीकु आहे. जॾहिं जी कंसंट्रेशन वधी वेंदी आहे त उते जेका लेबर कमु करे रही हूंदी आहे उन अलार्म वॼंदो आहे. अलार्म वॼण जो मतिलबु इहो आहे त हाइड्रोजन सल्फाइड जी कंसंट्रेशन वधी वई आहे. उन लाइ इहा डायरेक्शन हूंदी आहे त जेतिरो जल्दी पॉसिबल थी सघे फील्ड छॾे करे उनखां जेतिरो परे वञनि. ठीकु आहे. हाणे परे वञण सां छा थींदो? मां तव्हांखे ॿुधायो त जॾहिं असां रूम स्प्रे कयूं था रूम में, ठीकु आहे, त जेकॾहिं दरवाज़ो बंदि आहे त उनजी ख़ुशबू ओतिरो वधीक हलंदी. जेकॾहिं असां दरवाज़ा रूम जा खोले छॾंदासीं, विंडोज़ खोले छॾंदासीं, त उनजी ख़ुशबू बि जेका आहे उहा जल्दी स्किप थी वेंदी. त जेतिरो असां उन मिसाल तौर तव्हां हिकिड़े रूम में स्प्रे कयो आहे त उनजी ख़ुशबू ॿिए रूम ताईं न ईंदी, उन रूम में ईंदी. त जेतिरो उहे माण्हू फील्ड छॾे परे वेंदा, जेतिरो परे वेंदा त इनजी हवा में कंसंट्रेशन छा थींदी? घटिजी वेंदी. जेतिरो घटिजी वेंदी त उनजो पॉइजनस इफेक्ट बि छा थींदो? घटिजो वेंदो. ठीकु आहे. सो इन दिस वे असां ग्राम्स लॉ जी अप्लाई करे असां कंहिं बि जेको आहे उन गैस जे पॉइजनस इफेक्ट खे रिड्यूस करे सघूं था. नंबर 2 एप्लीकेशन इहा आहे, वी कैन सेपरेट और आइडेंटिफाई. सेपरेट भी करे सघूं था, आइडेंटिफाई भी करे सघूं था. आइडेंटिफाई डिफरेंट isotopes of an element. If element exists as a gas, जेकॾहिं एलिमेंट गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करे थो, ठीकु आहे, त असां वी नो दैट आइसोटोप्स जो मास जेको आहे उहो डिफरेंट हूंदो आहे, एटमिक नंबर छा हूंदो आहे? सेम हूंदो आहे. त असां गैस जे आइसोटोप्स खे, छो जो उन्हनि जो जेको आहे मालिक एटमिक मास चेंज हूंदो. मिसाल तौर असां हाइड्रोजन जी ॻाल्हि कयूं, हाइड्रोजन 1 आहे, हाइड्रोजन 2 आहे, हाइड्रोजन 3 आहे. प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, छा टिनी जो मास डिफरेंट आहे? जॾहिं मास डिफरेंट आहे त इन जी डेंसिटी डिफरेंट हूंदी. जॾहिं मास ऐं डेंसिटी डिफरेंट आहिनि त टिनी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन छा हूंदो? चेंज हूंदो. त असां जेको आहे इन टिनी खे सेपरेट करे सघूं था, आइडेंटिफाई करे सघूं था त असां वटि एयर में या गैस जे मिक्सचर में कहिड़ा कहिड़ा जेके आइसोटोप्स मौजूदु आहिनि. छो त असां रेट ऑफ डिफ्यूजन मां कंहिं बि गैस जो एटमिक मास या मालिकुलर मास बि फाइंड करे सघूं था. दिस इज़ द 3rd एप्लीकेशन. 3rd एप्लीकेशन इहा आहे, we can find molecular mass of an ideal gas if
वी आर गिवन असांखे छा मिलियल हुजे, असांखे बाबा R1 गिवन हुजे, R2 असांखे गिवन हुजे, M1 गिवन हुजे, M2 जेकॾहिं असांखे फाइंड करिणो आहे त वी कैन फाइंड इट, असां फाइंड करे सघूं था मालिकुलर मास कंहिं बि गैस जो। इफ़ वी आर गिवन वाट, असांखे हिकिड़ी गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन मिलियल आहे, ॿी गैस जो बि रेट ऑफ डिफ्यूजन मिलियल आहे, हिकिड़ी गैस जो मास मिलियल आहे पर ॿी जो नाहे मिलियल, त असां ॿी गैस जो मास उन नॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन मां फाइंड करे सघूं था। कीअं करे सघूं था, अचो त प्रॉब्लम्स कयूं। तव्हां हे नोट कयो, शाबाश, स्क्रीनशॉट वठो। सभिनि खां वधीक रेट ऑफ डिफ्यूजन आइसोटोप जी ॻाल्हि कयूं त पूरो हाइड्रोजन जो थींदो, छो जी लाइटेस्ट आइसोटोप आहे H1 जेको प्रोटियम आहे, इन खां हल्को कोई न आहे, इन करे सभिनि खां वधीक इन जो ई थींदो। जेतिरो गैस हल्की हूंदी ओतिरो रेट ऑफ डिफ्यूजन वधीक हूंदो। ठीकु आहे, अचो त हाणे कुझु प्रॉब्लम्स कयूं, पंहिंजा प्रॉब्लम्स कुझु मेन मेड प्रॉब्लम्स कयूं था। विच गैस diffuses 2 times faster than helium, A, B, C, D, and our options are hydrogen, methane, oxygen, ओज़ोन एंड नन ऑफ दीज। तव्हां आंसर डिसाइड कयो जेसिताईं मां ॿियो क्वेश्चन लिखी वठां। ठीकु आहे, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। which pair of gases diffuses at the same rate, A, B, C, D? CO and C2H6, CO and N2, CO2 and N2O, C2H4 and N2E, all except E। क्वेश्चन नंबर 3 आहे, पहिरियों ॿिन्ही जा जवाब ॾियो त पोइ असां 3 ॾे बि हलूं था। 1 में चए थो A आहे, 1 में A, राधिका छा में B आहे पुटु इहो त ॿुधायो। 1A या 1B ईअं लिखोसि, 1B 1B 1A 1B 1B 1A, बस A ऐं B जी जंग। 1 में छा A आहे, मां सम्झो मूं वटि होशियार स्टूडेंट पढ़नि था, सफ़ा ईअं हुजा। कासिद अली महर चए थो सही चए थो, अली बशीर बि सही चए थो, अजमल लखण बि सही चए थो, ॿुधाईंदो न छा चए थो, शाबाश। सोरठ चए थी सही चए थी, मुक़दस भी सही चए थी। अच्छा हाणे तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ आई आहे, ठीकु आहे। ॻाल्हि इहा आहे पुटु त विच गैस डिफ्यूज़िस 2 टाइम्स फास्टर देन, हाणे 2 टाइम्स फास्टर देन जेका आहे हीलियम खां, हाणे हीलियम खां 2 टाइम्स फास्टर देन डिफ्यूज़ थियण लाइ उन गैस जो जेको मॉलिक्यूलर मास आहे हीलियम खां 4 टाइम्स घटि हुजणु खपे, छो जो 4 जो अंडर रूट जेको आहे स्क्वायर रूट जेको आहे उहो 2 ईंदो आहे। ठीकु आहे, अहिड़ी का बि गैस न आहे जंहिंजो हीलियम जो मास 4 आहे, माना उन गैस जो मास जेकॾहिं हीलियम खां 4 टाइम्स घटि हुजे आहे त उनजो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन खां 4 टाइम्स छा हुजे वधीक हुजे। हाणे देयर इज़ नो गैस, हिन जो 2 ग्राम आहे, हिन जो 16 ग्राम आहे, हिन जो 32 ग्राम आहे, हिन जो 48 ग्राम आहे। ठीकु आहे, ठीकु आहे। हाणे हेवियर गैसिस हे जेके ट्रेन इहे त पॉसिबल न आहे जवाबु, छो त हीलियम खां उहा ई गैस फास्टली डिफ्यूज़ थी सघे थी जंहिंजो मास हीलियम खां घटि हुजे। हाणे इन टिनी जो मास
छा आहे वधीक आहे वधीक आहे त घटि आहे वधीक आहे त इहे ऑप्शन ईंदा आहिनि असांजो करेक्ट ऑप्शन थींदो नन ऑफ दीस ठीकु आहे अचो हिन ॻाल्हि ते विच पेयर ऑफ गैसेस डिफ्यूज़ एट द सेम रेट केरु ॿुधाईंदो जवाबु सेकेंड क्वेश्चन में छा आहे 2e आहे चलो तव्हां सम्झी वियो ॾिसो जंहिं गैसेस जो मास सेम हूंदो हाणे हिन जो 28 आहे हिन जो 30 आहे मास सेम न आहे इहो जवाबु न आहे ठीकु आहे हिन ॿिन्ही जो मास 28 ईच आहे 44 ईच आहे ॿिन्ही जो 44 आहे एंड 28 ईच आहे मास सेम त रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम ठीकु आहे सो दिस इज़ द राइट आंसर ई फॉर द सेकेंड क्वेश्चन नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 the ratio between rates of diffusion of two gases A and B is 3:2 ठीक है if the molecular mass of B is 30 gram. What should be molecular mass of A? A, B, C, D. अब चलो यो तव्हां करे ॾियो जवाबु कढी ॾियो छा थियणु खपे जवाबु छा ईंदो हिते केरु ॿुधाईंदो 45 67 13 13.3 67.5 शाबाश शाबाश कंहिं ॿी बि करेसि 67 इन हा इन 5-7 रिकॉर्डिंग कढी करे कट करे ॿिए ड्राइव में रखी छॾ शाबाश 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 13 अली बशीर चए थो 13 और जॾहिं हिकु बार सही जवाबु ॾींदो आहे पोइ वरी पंहिंजा जवाब रिपीट छो कंदा आहियो पोइ कॉपी न कयो न जेको तव्हां जवाबु कढियो आहे पंहिंजे दिमाग़ सां उहो ई रहण ॾियो 45 दीपक गोडवाणी चए थो 13.3 सुगंध आरती भी 13.3 चलो ॾिसूं था हाणे पहिरीं ॻाल्हि ॾिसो त ए ऐं बी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन मिलियल आहे हिन जो 3 आहे हिन जो 2 आहे फर्स्ट ऑफ ऑल मां तव्हांखे ॿुधायो त कंहिं बि कंफ्यूजन खे अवॉइड करण लाइ फर्स्ट ऑफ ऑल तव्हांखे इहो ख़बर हुजणु खपे त 1 फैक्टर तव्हां लाइटर गैस खे ॾींदो 2 फैक्टर हेवियर गैस खे हाणे तव्हां मूंखे एतिरो ॿुधायो ए ऐं बी मां लाइटर गैस कहिड़ी आहे हेवियर कहिड़ी आहे शाबाश मैसेज कयो आहे कमेंट कयो त ए ऐं बी मां लाइटर कहिड़ी आहे हेवियर कहिड़ी आहे ए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जेको आहे 3 आहे बी जो 2 आहे लाइटर कहिड़ी आहे बसि इहो ॿुधायो लाइटर ए आहे लाइटर ए आहे लाइटर बी आहे लाइटर ए आहे लाइटर बी आहे अति केर चए थो बी आहे सागर पेवाणी चए थो बी आहे पर जंहिंजो रेट ऑफ डिफ्यूजन वधीक हूंदो उहा गैस लाइटर हूंदी रेट ऑफ डिफ्यूजन ए जो वधीक आहे त हे लाइटर आहे हे हेवियर आहे पहिरियों तव्हांखे इहो ज़हन में रखिणो आहे ठीकु आहे त गैस लाइटर उहा हूंदी जंहिंजो रेट ऑफ डिफ्यूजन छा हूंदो वधीक हूंदो हेवियर गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटि हूंदो अच्छा हाणे इक्वेशन छा आहे असांजी R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1 हाणे R1 फॉर लाइटर गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन छा आहे 3 आहे असां हिते लिखंदासीं 3 हेवियर गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 आहे 2 अंडर रूट फाइंड छा करिणो आहे तव्हांखे फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी सॉरी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी यानी बी जेका आहे उहा कहिड़ी गैस आहे हेवियर आहे त यानी 30 ग्राम असांखे हेवियर गैस जो मास मिलियल आहे पोइ असां छा फाइंड कंदासीं M1 मां रिपीट कयां थो त रेट ऑफ डिफ्यूजन जंहिंजो वधीक हूंदो उहा लाइटर गैस हूंदी जंहिंजो घटि हूंदो उहा हेवियर गैस हूंदी त R1/R2 लाइटर गैस अपॉन हेवियर गैस लाइटर गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन 3 आहे ऐं हेवियर जो 2 आहे इज इक्वल टू M1/M2 मास छा जो मिलियल आहे मास असांखे बी जो मिलियल आहे बी इज़ द हेवियर गैस त M2 जेको आहे असांखे 30 मिलियल आहे हाणे छा कंदासीं असां M1 फाइंड करिणो आहे ठीकु आहे छा कंदो तव्हां कंदो बस बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स छा कंदो बस कंदो ठीकु आहे
बस बस कीअं कंदो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पोइ हे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में छा थींदो अंडर रूट ख़तमु थींदी 3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू छा लिखंदासीं m1/30 ठीकु आहे ऐं स्क्वायर छॾायूं 3 जो स्क्वायर रूट छा थींदो 9 ऐं 2 जो स्क्वायर छा थींदो 4 इज इक्वल टू m1/30 m1 फाइंड करणो आहे 30 खे हेॾे खणी अचूं त m1 इज इक्वल टू छा थींदो 9/4 इंटू 30 ठीकु आहे हाणे टेबल हाणे छा जो थींदो हिते 2 जो टेबल हिन ते घणा दफ़ा 15 दफ़ा ऐं 2 जो टेबल हिन ते 4.5 टाइम्स हाणे 4.5 खे 15 सां मल्टीप्लाई कयो जवाबु छा ईंदो नो सर ग़लति आहे पोइ सही ॿुधायो न सही कीअं थींदो मां त ग़लति कयो आहे शाबाश 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 सही केरु कंदो m2/m1 थींदो ठीकु आहे हाणे m2 तव्हांजो छा आहे यानी हिते असांजो हे न थींदो असांजो थींदो 30/m1 छो m1 हेठि आहे त हिते छा थींदो 30/m1 हलो बस बस कयोसीं ठीकु आहे हिते छा थींदो 30/m1 ठीकु आहे हाणे तव्हांखे छा फाइंड करिणो आहे m1 फाइंड करिणो आहे m1 कीअं फाइंड कंदासीं m1 हेॾे डिवाइड करे हेॾे खणी ईंदासीं मल्टीप्लाई कंदो ठीकु आहे त m1 इज इक्वल टू m1 सां हे मल्टीप्लाई कंदा होॾे डिवाइड कंदा वञा 30 इंटू छा थींदो 4/9 ठीकु आहे इट बिकम्स 120 डिवाइडेड बाय 9 3 जो टेबल हणो 3 टाइम्स 3 जो टेबल 40 टाइम्स 40 ते 3 जो टेबल वेंदो 13.333 आंसर ईंदो इन दिस वे इफ वी आर गिवन molecular mass of one gas rate of diffusion of two gases त इन टिनि शयुनि मां असां ॿी गैस जो जेको आहे उहो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करे सघूं था नाउ आवर ऑप्शन्स आर 13.33 26.66 40 और असांजो जेको ॿियनि स्टूडेंट्स आंसर लिखियो 67 ग्राम लिखियो ठीकु आहे 67 तव्हांखां ग़लती ईअं ई थी वई जीअं मां ग़लती में लिखी मां बि ग़लती में ई लिखी हुअमि ठीकु आहे मूंखां मां डेलीबरेटली मिस्टेक न कई बल्कि आई वॉज मिस्टेक इन ऐं तव्हां मूंखे पकड़े वरितो ठीकु आहे सो इन दिस वे इंसान आहियूं ग़लती थी वेंदी आहे असांजो आंसर जेको थींदो पुठि हेठि थींदो ठीकु आहे त असां हाणे हिकिड़ो प्रॉब्लम सिर्फ़ु टाइम वारो करे वठूं त पोइ वरी ॾिसूं चलो चोथों नंबर क्वेश्चन इहो आहे तव्हांजो फोर्थ नंबर इफ helium gas diffuses from 10 liter container in 13 seconds ठीक है तो if helium gas diffuses from 10 liter container in 13 seconds then how long SO2 will take from same container ठीक है क्वेश्चन असांजो इहो आहे त हीलियम गैस जेका आहे हल्की गैस आहे एज कंपेयर टू SO2 त T1 असांखे मिलियल आहे 13 सेकेंड्स T2 असांखे फाइंड करिणो आहे V1 असांजो जेको आहे उहो 10 लीटर आहे V2 बि चए थो 10 लीटर आहे चए थो सेम कंटेनर आहे माना 10 लीटर आहे M1 असांजो आहे बचा घणो आहे 4 ग्राम आहे लाइटर गैस हीलियम आहे हीलियम जो मास 4 आहे M2 जेको आहे असांजो उहो SO2 गैस जो जेको मास आहे उहो 64 ग्राम आहे इक्वेशन कहिड़ी यूज़ कंदासीं 4 कंदासीं 5 कंदासीं केरु ॿुधाईंदो इक्वेशन 4 कंदासीं 5 कंदासीं 42 ऐं 52 सेकेंड्स आंसर अचे थो ॿारनि जो इक्वेशन नंबर 5 यूज़ कंदासीं छो त एज वॉल्यूम इज़ सेम V1 इज़ इक्वल टू V2 हेंस वॉल्यूम विल बी कैंसल्ड असां इक्वेशन यूज़ कंदासीं T2/T1 इज़ इक्वल टू रेडिकल M2/M1 हाणे T2 जेको आहे असांखे फाइंड करिणो आहे T1 केतिरो मिलियल आहे 13 सेकेंड्स इज़ इक्वल टू छा कंदासीं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेवियर गैस घणो आहे 64 डिवाइडेड बाय लाइटर गैस जो मास केतिरो आहे 4 असां रेडिकल छॾाईंदासीं हिन ते 16 टाइम वेंदो रेडिकल 16 इज़ इक्वल टू 4 ठीकु आहे त T2 इज़ इक्वल टू 13 इज़ इक्वल टू 4
त T2 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 13 डिवाइड करे त हेॾे खणी ईंदासीं 13 त T2 इज़ इक्वल टू छा थींदो 42 ग्राम, सॉरी 42 ग्राम न बल्कि सेकेंड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट असां कयोसीं त जेकॾहिं असांखे छा मिलियल हुजे, असांखे जेको आहे हिकिड़ी गैस जो टाइम मिलियल आहे त उहो केतिरे टाइम में फ्यूज़ थिए थी त असां सेकेंड गैस जो बि टाइम फाइंड करे सघूं था। नोट कयो, ठीकु आहे, स्क्रीनशॉट वठो सर, भॼन अचनि था। अच्छा 52 थींदो 13 इंटू 4 आहे न, सही आहे, 52 थींदो बाबा, 52 सेकेंड्स थींदो। शाबाश, नोट कयो इनके।